Good morning 11th standard. Now today we are going to discuss about the another topic of thermodynamics. In my previous one video you have seen that we discuss about that how the enthalpy, change in enthalpy and change in internal energy is measured, and that is measured with the help of bomb calorimetry. With that we also studied in my previous one video about the different types of enthalpy, enthalpy of reaction, standard enthalpy of reaction or molar enthalpy. So different types of enthalpies we discussed. Now today we are going to discuss a very important topic, and that is in thermodynamics, and that is Hess law of constant heat summation. ठीक है बेटा. Now Hess law basically is the Bornhaber or the Hess, they have given about this, and this law is basically tell us about that enthalpy is a state function. It depends only on the initial and the final position, not on the path followed by the reaction. तो उन्होंने according to this law, Hess law of constant heat summation, if a reaction takes place in several steps, क्या? If a reaction takes place in several steps, then it's a standard reaction enthalpy. Standard reaction enthalpy, we have already discussed about this term. Standard reaction enthalpy mean which is takes place at standard temperature and pressure. Temperature हमने बात करी थी 298 केल्विन और प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेरिक की बात की थी. So standard enthalpy standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions into which overall reaction may be divided at same temperature. कहने का मतलब ये है बेटा कि चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में एग्जिस्ट कर रही है, बट उसका जो टोटल रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी होगा, स्टैंडर्ड रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी होगा, दैट विल बी द सेम वन, और वो सारी स्टेप्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा. So it just depends on the initial and the final position. For example, I just cite you a one example like carbon, जिसे कि हम ग्रेफाइट भी कहते हैं. When graphite undergoes combustion, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में combustion को undergo करता है, so carbon is present in solid, oxygen is present in gaseous form, then it gives carbon monoxide. ठीक है, तो क्या दे रहा है आपका कार्बन monoxide it is given, and what will be or how we can calculate the enthalpy of reaction in that case. So please just have a look here that we just break up it into the steps. हम उस reaction को different steps में कर लेते हैं. हमें इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें रिएक्शन मिली है उसको हमें क्या करना है, we have to break up that into the different small several steps. So for that we can do what we can do, like carbon plus oxygen gives carbon dioxide. हमें मालूम है कि this reaction will also take place along with the formation of carbon monoxide, because it depends upon your कि कितना formation आपका carbon monoxide हो रहा है, that depends upon the percentage or the supply of oxygen. So if the oxygen is completely supplied, then instead of forming a carbon monoxide, it forms a carbon dioxide. So in that one case, if it is given to us ki delta enthalpy of reaction, that will be in this one case, if it is delta enthalpy of reaction for this reaction, the reaction number 1, if it is minus 393.5, now why minus sign is there? Because it is an exothermic reaction. Combustion हो रहा है ना, तो exothermic है. So it is kilojoule per mole. The second one step हम जो लेते हैं वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाफ O2
Now this carbon monoxide plus half O2 gives carbon dioxide, and that's enthalpy of reaction is minus 283.0 किलोजूल पर मोल. अगर हमने ये लिया है बच्चे, तो यहाँ पे देखिए, this is step number 1. This one equation goes to step number 2. Now by adding these two I do not get the final product this one. तो मैं क्या कर सकती हूँ, can I reverse this equation? मैं इस equation को अगर reverse कर देती हूँ तो मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड राइट हैंड साइड में मिल जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट रिवर्स द रिएक्शन. अगर आप किसी रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो सिंबल जो हो जाएंगे, साइन कन्वेंशन जो हो जाएगा, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी एंडोथर्मिक हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्सोथर्मिक, एंड द सिंबल विल बी यूज्ड पॉजिटिव. तो मैंने जस्ट यही किया है, दैट CO2 गिव्स CO plus half O2 and delta HR is equals to plus 283.0 kilojoule per mole, but here the symbol is used for endothermic, so it is positive. ठीक है, तो symbol change कर दिया. Now when we add equation number 1, C plus O2 gives CO2, and equation number 3, CO2 gives a CO plus half O2, तो दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा बेटा, करो C plus O2. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 का है, ध्यान से देखिएगा, और प्लस CO2 ये हमारी इस इक्वेशन का है, तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया. गिव्स CO, ये आया CO2, ये मैंने ये लिखा हुआ, प्लस CO प्लस हाफ O2 ये आ गया. नाउ प्लीज जस्ट क्या क्या कट हो सकता है, CO2 एंड CO2 दोनों साइड से कट हो जाएगा. ओके, O2 यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे हाफ O2 है, तो 1 मोल में से ये इधर लाते हैं तो सबट्रैक्ट होगा जैसे आप रिडॉक्स में करते थे. सो हाउ मच इट इज लेफ्ट, हाफ O2, वो ये आ गया. ठीक है, सो इट इज देयर हाफ O2, सो कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO, बाकी ये इससे कट जाएगा 1 O2 से, एंड हाउ मच इट इज लेफ्ट, हाफ O2. Now delta enthalpy of reaction for first equation is minus 393.5 plus this for this is 283.0 किलोजूल. तो दोनों को ऐड किया, आंसर इज minus 110.5 किलोजूल पर मोल. सो फॉर दिस बेटा अ सिंपल वन, ये क्या आ गई हमारी, दैट इज enthalpy of reaction for CO. C plus half O2 gives CO. So beta in this one means we can just say that the enthalpy Hess law is used to calculate the enthalpy of reaction for whole. ठीक है बेटा, so please just note down this. After that we will move to the different types of reactions. हम उसके लिए मूव करते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लेंगे सब. ये कर लिया है सबने नोट डाउन, जल्दी बताइए. If you noted down it, then we move to the another one topic. Hess law का मतलब हम अभी यही बात कर रहे थे कि in this one basically what we are going to do, we just break up a main reaction into different several steps, easy steps, and whatever the enthalpy of the reaction, या हम सीधा कहें तो delta HR of reaction is equals to delta HR for first step plus delta HR for second step plus delta HR for third step. If a reaction is existing in more than 3 intermediate steps, then all the 3 intermediate steps addition sum gives us the enthalpy of reaction. This is basically a Hess law of constant heat summation. After this we move up to the different types of reactions, in which we are going to study about the first reaction, and that is standard enthalpy of combustion.
words we know. We know the word